Hello, friends. Good evening. Once again, this is one more Sunday, and I'm back with my weekly session on career growth tips. I hope that till now your Sunday has been very fantastic, and we wish that next 25-30 minutes that we are going to talk about, ये आपका संडे को और थोड़ा सा अच्छा बनाएगा. You are a person who wants to grow in your career, and that is the reason you are here. So, just to give you a little background, what we do here. So, my name is 𝙩𝙤𝙧𝙚𝙙𝙧. I'm an author, an ICF certified career and executive coach. So, every Sunday, I come live to share something related to your career growth. हमारा जो ग्रोथ होता है कैरियर में वो एक स्लो प्रोसेस है, राइट? स्टेप बाय स्टेप लेवल में होता है, एंड द सक्सेस और द प्रोग्रेशन दैट happens with every inch of self development that we go through. जैसे जैसे हम अपने आप को डेवलप करते जाते हैं उसी हिसाब से हम लोग कैरियर में प्रोग्रेस होते जाते हैं. So as a part of that, this is a small effort from my side is to add a little bit of value. जब आप अपने लिए इतना कुछ कर रहे हो अपने आप को डेवलप करने के लिए, क्यों ना थोड़ा सा मैं भी अपने तरफ से प्रयास करूं. And if it helps you, I'll be so happy to add a little bit of value in your life, and that's my intention, friends. So as usual, today we are going to talk about one more topic related to your career progression. Before that, as you already know, my new book is coming up on 21st of May. If you have not pre-booked your copy, please go ahead and do the pre-book. It's available for pre-booking on Amazon. And obviously, when the book releases on 21st of May, it will be available on Amazon, it will be available on Flipkart, and also on Kindle version. So in case you like to read the Kindle version of it, wait for 21st May. On that day, that will be available. So this book is actually on the topic of how to improve your focus. आप लोगों को मालूम है कि फोकस, कोई भी एक्टिविटी आप करते हो उसके ऊपर फोकस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक दैट एक्टिविटी सक्सेसफुल एंड एड सम वैल्यू इन योर लाइफ. करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट अगर आपका एक्टिविटी में फोकस नहीं है, देन जो भी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी विल नॉट कम टू द लेवल दैट यू एक्सपेक्ट. हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाए, इसीलिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इन टूडेज लाइफ दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज टुडे डिस्ट्रैक्शंस आर सो मेनी. आज से 15-20 साल 25 साल 30 साल पहले शायद इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, राइट? यू नो व्हाट आई मीन. बट टुडे देयर आर सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. सो इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न द टेक्निक्स टू improve our focus and thereby deliver better result, add more value to our life, and of course in the process whatever the definition of success, आपके नजरिए से जो भी डेफिनेशन है सक्सेस का, उस सक्सेस को आप जल्दी से अचीव कर पाओ बिकॉज यू आर सो मच फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल. वेल, दैट्स अबाउट द बुक. कमिंग टू टुडेज टॉपिक, एज यूजुअल मैं आप सबको वही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन केस you have any questions, comments, etc., please go ahead and put it in the comment section. Let's have some interaction between us, right? And interaction will make it much more learning opportunity, learning experience मेरे लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए, right? So don't shy away from writing a little bit of comment on the comment section, and मैं वो comment यहाँ पे सबके सामने दिखाऊंगा. थैंक यू सो मच. सो सबसे पहले आप लोगों को एक सवाल है मेरे तरफ से टू कम टू द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन. ये सवाल ये है कि हैव यू एवर बीन पास्ड अ नेगेटिव कमेंट एट वर्क? आपको आपके कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, काम के जगह पे कभी भी कोई भी नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ा है क्या? आई एम श्योर इन 99% केसेस, yes, you might have faced or you might have come across with a negative comment from someone at your workplace at some time in your working life. है कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बताइए, राइट? मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मैंने फेस किए हैं,
and I'll be sharing some of those examples in today's discussion. Now, अगर आपने negative comment face किया है, then मेरा next question आपको यही रहेगा, and the question is this, because would you like to learn how to use that negative feedback to your advantage so that it can help you grow in your career? राइट, सो वी विल लर्न कि निगेटिव फीडबैक को किस तरह से हम लोग पॉजिटिवली यूज कर पाए एज एन अपॉर्चुनिटी. समबडी हैज पास्ड अ नेगेटिव कमेंट, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यूज करेंगे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए. उसी के ऊपर हम लोग का टॉपिक है आज. वेल या, हाय सुबोध. ओके, यस सुबोध, यू आर राइट, इट ऑलवेज हैपेंस एट वर्क प्लेस, राइट. ये हमेशा होता है, किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम, बट कभी ना कभी आई एम श्योर यू हैव फेस दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन. एंड यस, Mr. Priyanka is also saying, yes, it's there at workplace, and in most of the workplace, this kind of a situation you will come across with. Thank you so much for your comment there. Now, the question that we have asked is, have you ever been passed a negative comment? I'm sure that many of you, as you have responded, two of you have already responded that yes, this kind of situation happens in the workplace. Now, obviously, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सो दैट वी कैन लर्न द टेक्निक्स ऑफ हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव कमेंट टू आवर एडवांटेज. हमें हमेशा वो चीज देखना है. जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है कि नहीं. अगला बंदा आपसे क्या बताएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है. आप खाली इतना कंट्रोल में कर सकते हो कि आप रिएक्ट किस तरह से करोगे. सो कुछ भी चीज होता है, आपका अप्रोच होना चाहिए, उसको मैं अपने एडवांटेज में किस तरह से कन्वर्ट करूं. सो दैट्स व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. वी विल टॉक अबाउट 5 proven tips for handling negative comment in your workplace to help you grow in your career. Okay, now जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स सुने हैं, तो मैं एक दो किस्सा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं. सो लेट मी शेयर सम ऑफ दिस एग्जांपल्स. नाउ, मैं यहाँ पे उसको लिख के दिखा रहा हूँ सो दैट यू नो वी हैव अ बेटर कन्वर्सेशन बिटवीन ईच अदर. What exactly the situation that I faced? Well, okay, so yeah, Subir has a comment. I also got lots of negative comment from this and other stakeholders from my previous organization, and I overcame those gaps while doing lots of work to improve myself. Wow, great. Thank you so much for your comment. Yes, so more or less everyone or everybody at some place in their career, at some time in their career, they would have faced some sort of negative comment for sure, right? Now, this is one of the example that एक टीम मीटिंग में I presented something, and my manager actually told me that ऋद्धिमान, तुमने सही से काम नहीं किया, इसमें बहुत सारा गलतियां है यार, क्या काम किए. And it was a full meeting with 4-5 people. 4-5 colleagues were also there. सबके सामने मुझे जब वो सुनना पड़ा कि ऋद्धिमान क्या काम किया है यार, इसमें मेरे को जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से काम नहीं हुआ. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को बहुत बुरा लगा, राइट. कोई भी होगा तो उसको बुरा लगेगा बिकॉज देयर इज अ रीजन. बुरा तो सबको लगता है, बट फॉर मी व्हाई आई फेल्ट सो बैड, बिकॉज उसके लिए मैंने करीबन 10-15 दिन तक काम किया था, एंड टू मेक इट रेडी टू प्रेजेंट इन दैट मीटिंग. और इतना हार्ड वर्क करने के बाद मीटिंग में व्हेन आई प्रेजेंटेड इट, आई गॉट दैट नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम माय मैनेजर कि क्या काम किया, इसमें तो कुछ भी नहीं है. सो दैट वाज नॉट अ वेरी गुड कमेंट दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग. सो मैं ऑब्वियसली मायूस हो गया एंड फेल्ट आल्सो लिटिल बिट एम्बैरेस्ड बिकॉज 4-5 कलीग थे वहां पे, राइट. उनके सामने व्हेन माय मैनेजर वाज गिविंग मी दैट काइंड ऑफ अ नेगेटिव कमेंट, आई फेल्ट रियली सो बैड. इन फैक्ट immediately because of that embarrassment, what I did, I became defensive and started giving reason कि क्यों नहीं हुआ. मैंने बताया, what happened, I was expecting this रिपोर्ट फ्रॉम मिस्टर सो एंड सो. उन्होंने मेरे को टाइम से रिपोर्ट नहीं दिया, इसीलिए मैं उसको अच्छी तरह से बना नहीं पाया. मेरा रिपोर्ट या मेरा प्रोजेक्ट गॉट इम्पैक्टेड बिकॉज द अदर पर्सन डिड नॉट डू हिज जॉब ऑन टाइम, एंड दैट्स व्हाई आई कुड नॉट एबल टू डू.
यू नो व्हाट, मेरे को इमीडिएटली फीडबैक में मिला मेरे मैनेजर से कि धृतमान, take the responsibility on your shoulder. Don't try to point finger on somebody else. well, negative comment के बाद फिर से एक negative comment and advice. So you can imagine how I was feeling before my all four other colleagues were also there. I felt terribly bad, right? So मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे फील नहीं हुआ, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको रियलिटी, मुझे बहुत ही बुरा लगा ना। अगर आपका इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस है, प्लीज गो अहेड एंड शेयर विद अस, पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। इट कैन बी अ स्मॉल इंसिडेंस, इट कैन बी अ वेरी बिग इंसिडेंस। सिमिलरली एक और इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ, एंड इस केस में आई हैड टू वर्क विथ वन ऑफ माय कलीग इन अ प्रोजेक्ट, एंड दिस पर्सन was really a very difficult person, you know. Now what exactly I mean when I say this person was very difficult, because इनको ना एक आदत था कि आप मतलब कुछ भी इनके सामने लेके जाओ, he will always point out some flaws, some errors, some mistakes. अरे तुमने ये क्या किया, ऐसा थोड़ी ना होता है, किसने बताया ऐसा होता है, ये गलत किया तुमने. So he used to always criticize me and used to find faults in whatever activity I do. ना जब मेरे को इस बंदे के साथ फिर से प्रोजेक्ट करने का मौका मिला, आई विल नॉट से इट्स अ मौका, इट्स अ पनिशमेंट काइंड ऑफ फॉर मी, दैट्स हाउ आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम. सो मैंने क्या किया, इवन दो दैट पर्सन वाज विथ मी इन दैट प्रोजेक्ट, दैट मीन्स हम दोनों मिलके उस प्रोजेक्ट में काम करना था हम दोनों को, बट व्हाट आई चूज कि मुझे, मैं अकेला ही काम कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट में. सो लेट मी वर्क अलोन. And I started working alone. I was not ready to confront that person. उसके साथ मेरे को वो मतलब उस तरह का बातचीत करना ही नहीं था, तो मैंने सोचा let me do it alone and let me simply concentrate on the work, submit my project to my manager and make my manager happy. तो मैंने ऐसा करके अपने मैनेजर को सबमिट कर दिया. नाउ इन द प्रोसेस द मैनेजर आस्क्ड मी, चलो आप दोनों ने, आई होप दैट बोथ ऑफ यू, आप लोगों ने मिलके इसके ऊपर काम किया है, एंड व्हाट हैज बीन योर कंट्रीब्यूशन, व्हाट हैज बीन द अदर पर्सन्स कंट्रीब्यूशन. नाउ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑब्वियसली मुझे बोलना पड़ा अपने मैनेजर को कि सर नहीं, मैंने अकेला किया है. सो माय अदर कलीग वाज लिटिल बिट बिजी, सो आई हैव डन एवरीथिंग. एंड again I received the feedback. So I received the feedback saying that I need to be more collaborative and direct. That means मुझे collaboration skills सीखना चाहिए कि किस तरह से दूसरे लोगों के साथ काम करना पड़ता है. Sometimes you will not be getting to work with a person with the characteristics, with the qualities that you like to have in another person. आपके चॉइस में शायद नहीं होगा, तो आपको जो बंदे मिलेंगे as a team member to work on a particular project, आपको उनके साथ ही collaborate करके काम करना पड़ेगा. And I need to be direct. If something that I don't like, some sort of comment that is made against me, I need to raise that issue immediately directly with that person, saying that आपका इस तरह से मेरे साथ बात करना, इस तरह से मेरे को negative comment pass करना अच्छा नहीं लगा. So that's what the feedback that I received from my manager. So there are so many such examples, but I thought of that I'll be sharing these two examples with you because I'm sure that many of you will be able to relate to similar kind of situations at the workplace. If you have done that, you can put it on the comment section with 1 or 2 lines saying that what kind of situation you faced at your workplace wherein you thought that you have received some sort of negative comment and that impacted your performance at your workplace. Well, friend, now again coming back, what exactly we are going to do today? Yes, we are going to talk about 5 tips, right, for handling negative comment at workplace and how you can grow in your career. So without delaying much, let us start talking about these 5 points. The number 1 point that I have for you is, well, किसी ने भी आपको negative comment किया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या कमेंट किया. So listen actively to that person, what exactly the comment that person has made. अरे तुम्हारा काम बहुत खराब है. Is it that comment or little bit explained
way that person given you a comment. So some of the things that you can do as soon as you listen to a negative comment is this. The first thing that you should do is pay attention to the exact feedback or the comment that the other person has made. Pay attention to that comment, that exact comment the other person has made. The second thing that you can do under this is ask questions to clarify the issue or the concern. किसी ने बोला कि अरे आपसे तो ये काम होता ही नहीं है, नेगेटिव कमेंट पास कर दिया, तो पूछिए उनको व्हाट डू यू मीन बाय मुझसे ये काम होता नहीं है, आप एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हो। तब शायद वो जो बताएंगे दैट विल गिव यू क्लैरिटी कि उनका उस कमेंट का मतलब क्या था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट कमेंट दैट दैट पर्सन इज गिवन टू यू। सो इफ यू आस्क लिटिल बिट डीपर देन ओनली यू विल कम टू नो। एंड द थर्ड थिंग हियर is when the person is explaining that comment to you, show a little bit of respect to that person who is giving that comment and explaining it what exactly that person means without becoming defensive, because अगर आप डिफेंसिव हो जाते हो सकता है जो आपको वो कमेंट दे रहे थे वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। बट अगर डिटेल में नहीं जाएंगे possibly you are going to miss something, an opportunity to learn, to improve, right? Isn't it so? So that's why ध्यान से सुनिए वो कमेंट क्या पास कर रहे हैं। Now in the process please understand one thing, we also need to be practical. Sometimes there are some people in your organization who may pass on a comment which is impractical, right? Just for the sake of gossiping or making you demotivated. Now, obviously, we are not referring to those kind of situations. We are talking to those kind of situation wherein somebody is sensible, that you consider that person to be sensible. Excuse me, and that person has passed on a comment. ऐसा अगर होता है तो थोड़ा सा डिटेल में पूछिए कि उनका कमेंट का मतलब क्या था, so that you can understand the gist of that comment and उससे कुछ सीखने का opportunity है कि नहीं. So that is the first thing that you should do. The second thing, whenever you receive a negative comment, please don't take it personally. अरे तुमसे तो कुछ काम नहीं होता है, ऐसा किसी ने कमेंट कर दिया। इन्होंने बोला कि you cannot do anything properly. You, as soon as the person says you take it personally. Now, when the person says you cannot do any job properly, please ask that person, what do you mean? If it is your manager, ask, can you please explain what do you mean when you say that मेरे से कोई काम होता नहीं है, I cannot do anything. Possibly that person will be explaining, you know what, yesterday that work that you have done or that email response that you have given, I was expecting a better response from your side. You have written these things. It is not the right way to write, right? So जब भी उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया, आपको तब पता चला कि मेरे को नहीं बोल रहे थे, मेरे काम को बोल रहे थे। The way I have responded in the email, ईमेल में रिस्पॉन्स करने के तरीके को बात कर रहे थे, not to me, right? So that's why don't take personally. Remember this particular thing, that negative comments are often about the work, not about you as a person, my dear friend. So ये इस बात को रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The second part here is try to remain objective and focus on the specific feedback or the criticism. Remain objective to that particular comment that is given, to that particular specific work area जिसके ऊपर इन्होंने comment दिया कि इस एरिया में आपने अच्छा काम नहीं किया, right? And avoid becoming defensive. Again, I am repeating, avoid becoming defensive and argumentative. कि नहीं ऐसा बोलने से होगा क्या, मेरा काम तो ठीक है, who told you that? I always do job in the perfect manner, I never make any mistake. Or don't get defensive and argumentative in response of a negative comment. Never ever do that. The third thing that you should be doing as a part of handling a negative comment is respond to that person with professionalism. Even though it sounds that the other person, while giving you a comment, was not professional, maintain your professionalism, because you are a professional even though the other person is not. So
try to give a indication that I am professional by responding professionally to that particular situation. कैसे कर सकते हो? If you break it down, the first thing, take a moment to collect your thoughts before responding. ये बहुत important होता है. कभी भी कोई negative comment आपको मिलता है, immediately don't try to give a response. Just understand, organize your thoughts, and then respond professionally. Acknowledge the feedback and thank the person for sharing the perspective. आपने पूछा उनको, सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये जो आपने कमेंट दिया मुझे, नेगेटिव कमेंट दिया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट which area of my job requires an improvement. And once the person explains कि you know what, ये आपने जो ये एक्टिविटी किया, इस एक्टिविटी में ये वाला प्रेजेंटेशन जो बनाया, इसमें the wording that you have used cannot be used in this particular program wherein you are going to use this presentation. So जैसे उन्होंने बताया, आपको पता चला, अच्छा, he is talking about the language that I have used in my presentation which has to be changed. So thank that person to give you this particular feedback, right? And also provide a constructive response that shows your willingness to address the issue and improve your work. तो आप इस तरह से respond दे सकते हो, thank you so much for giving me that feedback. So I'm going to rework on my presentation and will ensure that I change the language according to my audience. Possibly आप ये भी बोल सकते हो कि ये change करने के बाद can I again come to you and show it to you and take your feedback? Well, that will show your professionalism in the process. So that's the thing that you can do. That's the third thing that you can do. Coming to the fourth thing, what you are supposed to do is use this feedback to grow. ये सबसे important part है हमारे लिए, because we are talking about growing in your career. हम लोग किस बारे में बात करते हैं कि how to grow in your career. So obviously the feedback or the comment, negative comment that you have received, use that negative comment for your own growth. And आप किस तरह से कर सकते हो इसको? Look for opportunities for to use that negative comment as a learning experience. For example, हमने ये वाला experience मिला, किसी ने, अरे तुमने क्या PPT बनाया, ये PPT तो है ही नहीं ठीक. तो आपने डिटेल में पूछा कि what do you mean by that? किसी ने आपको बताया that the language that you have used in the PPT is not fit for the audience to which you are going to present. तो आपको ये सीख मिला, right? So use that as an opportunity for learning, so that next time when you are going to prepare a presentation for the same audience, you will be using the appropriate language for that audience. So that means आपने थोड़ा सा grow किया है कि नहीं? So identify the specific areas for improvement and create an action plan. तो जो भी feedback मिला और जो भी negative comment मिला, opportunity of improvement आपको दिखा, उसके ऊपर एक action plan बनाइए उसको improvement करने के लिए. And the third thing that you can do is follow up with the person who provided you that particular feedback and check with that person. ये देखिए, आपने last time ये feedback दिया था, this time I have made this presentation. What do you think about the language now? Do you see an improvement, or you still see an opportunity for improvement? So that shows your professionalism. And the last part, that is the fifth part, to handle a negative comment for your own career growth. Yes, my dear friend, this is also important for your career growth, is to take care of yourself, right? We are talking about you. So take care of yourself. What happens when we get a negative feedback from anyone? What happens? आपको कैसा फील होता है जब आप किसी से नेगेटिव कमेंट फेस करते हो? बुरा लगता है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे भी बुरा लगा था. एंड वो बुरा लगना कभी कभी बहुत डीप लेवल में चला जाता है, राइट? इट गोज सो डीप into your emotions that it starts disturbing you. Some people cannot even take it, cannot digest that emotional setback of getting a negative comment. And that situation actually disrupts their daily life, not only at office, but also at home. So remember that any negative feedback that you received is obviously very, very stressful. एंड आपका जो वेलबींग है, फिजिकल मेंटल वेलबींग, उसको इम्पैक्ट करते हैं. तो इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप इसको उस लेवल तक जाने मत दो जबकि ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है एट अ पर्सनल लेवल.
So please ensure that take some time to reflect on the feedback and how it aligns with your goals and values. किसी ने आपको फीडबैक दिया, उस फीडबैक मिलने के बाद आप इतना मायूस हो गए कि आपने कंप्लीटली अपने आप को शट डाउन कर लिया फ्रॉम द वर्ल्ड. डोंट डू दैट. Understand that in most of the cases, I'm not saying all cases, in most of the cases, a negative comment is actually an opportunity to improve that specific area जहां पे आपको comment मिला है. Why I'm saying in most of the cases? Sometimes, however good work you do, there will be some people who will be commenting on your work, and that's a part of life. Please accept that situation. Somebody sometimes will always be commenting on your work. आप जितना भी अच्छा काम कर लो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता. You know that, right? There is nothing called perfect as such. हर काम में खामियां अगर आप ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो. So don't feel bad. Rather, use that opportunity to improve as a individual performance. So yes, Subir, thank you for commenting. That's true. So that's why don't go deeper into emotional aspect whenever you receive a negative comment. So please also ensure that take care of your physical health to ensure that you are better equipped to handle feedback in the future. Now, why it is important? जब आपका physical health ठीक रहता है, तब आपका mental health भी ठीक रहता है, and then you get a mental cushion जिसमें कोई भी negative comment आने के बाद वो bounce होके निकल सकता है. So अपना health का ख्याल रखिए, because you never know, tomorrow morning you may face a negative comment from someone. Question is, are you ready today to get that negative comment? अगर कुछ भी काम नहीं करता है, then please take support from a mentor or a coach or a counselor. If you think that negative comment आपको बहुत बहुत ज्यादा impact कर रहे हैं आपका emotional well-being और physical well-being में, then please take support of an expert. Don't shy behind closed door. दरवाजा बंद करके अंदर चुपचाप बैठ के रोना चालू मत कीजिए. Please take support. Support is available. It's a question of whether you are ready to take that support or not. Thank you so much, Priyanku, for your comments. Yes. So, friends, that's what I wanted to share with all of you today. Believe me, nowadays, the impact of negative comments is very, very high compared to many years back. Why? Because today we are emotionally at a very critical situation because of exposure to things like social media. आप सोशल मीडिया जैसे ही अपने आप को एक्सपोज करते हो, people make a negative comment, and you know that negative comment is visible to thousands of other people who are there in the social media, and it starts impacting you emotionally. With that emotional impact, it starts impacting your performance at work. And even though आपने इतना पढ़ाई किया था, आप इतना knowledgeable हो, because of the impact of one single negative comment can ruin your entire career, my dear friend. So don't let that happen. Take control of that situation, and please shine in your career. You are there to grow and achieve your career targets. So don't miss that achievement in your life only because Mr. A or Mr. B or Mr. C or Miss A or Miss B or Miss C have said something to you which was negative. Thank you so much, friends, for your presence here today in our Sunday evening regular career growth talk. In case you find this useful, my request to you will be to share this with your friends and colleagues who you think will be able to get a little bit of benefit through you, through your share with them. Thank you so much for your presence. So looking forward to your presence next week or next Sunday with one more topic related to your career growth. Till the time, take care of your mental and physical well-being.
Bye bye. Good night.